Right, so generally I don't make this sort of a video, but in today's video on Book Lovers Day, I wanted to talk about some of the other books which I have read over the years and I found absolutely wonderful and interesting. We'll divide it into sections. शुरू बात करते हैं हम with books that you might find relevant for your UPSC journey. One of the best books over there is द पावर ऑफ ज्योग्राफी बाय टिम मार्शल ने ज्योग्राफी से रिलेटेड और भी कई सारी किताबें लिखी हैं तो एनी वन ऑफ देम is a absolutely wonderful read. It gives you a very new perspective on geography. Highly recommended. Has a lot of detailed maps like this which really help you get the sense of कि भाई क्या ये बताना चाह रहे हैं. तो इस किताब में particularly जो ईरान वाला चैप्टर था, I had read a couple of years ago, and the new conflict that is going on, it's very fun to understand in the light of that information. Then another great book, Kashmir at the Crossroads by Sumantara Bose. This is I think grandson of नेताजी बोस एंड इन्होंने कश्मीर के बारे में पोस्ट 370 जो चेंज हुआ था उसके बाद इन्होंने उस कॉन्फ्लिक्ट का एक हिस्ट्री लिखा है बिकॉज आई ऑलवेज वांटेड टू नो कि भाई क्या एग्जैक्ट हिस्ट्री था. ग्रेट बुक फॉर दैट. Another great book is Rebel Sultans. So this is very good for medieval history कि जो आपका बहमानी सल्तनत थी या गोलकोंडा के जो नवाब बोलो या निज़ाम बोलो तो उनके बारे में ये स्टोरी है बिकॉज जनरली वेन एवर वी रीडिंग मेडिवल हिस्ट्री वी रीड इट फ्रॉम द बिग स्टेट्स कि भाई मुगल्स थे, दिल्ली सल्तनत था, बट व्हाट वाज हैपनिंग इन द डेक्कन. सो दिस इज अ ग्रेट स्टोरी अराउंड दैट टाइम. ऑल्सो has a lot of very nice pictures. So always look for books with pictures because makes it think more interesting. Next, let's come to the fiction. Now fiction mein naturally I have read a lot of fiction like Isaac Asimov Foundation series has been one of my all-time favorites, but I chose a couple of them. So this is a new series that I recently read. This is the first part of 3 and phenomenal. बहुत ही बढ़िया पेसिंग है, बहुत ही बढ़िया वर्ल्ड डिज़ाइन है एंड द पावर सिस्टम इज़ प्रीटी इंटरेस्टिंग. हैज़ स्लेवरी जैसा एक कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू पावर जनरेशन हो रही है. तो लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग थिंग्स हैपनिंग. देन फिक्शन में वन ऑफ माई ऑल टाइम फेवरेट ऑथर्स इज Brandon Sanderson. I have read almost everything that this guy has written. And the Hero of Ages is the third part of the Mistborn series. तो Mistborn series इनकी है starts with I think The Final Empire, The Well of Ascension and The Hero of Ages. तीनों किताबें थोड़ी ऐसी सी मोटी मोटी हैं, बट आई कैन गारंटी यू इफ़ यू आर इन टू फैंटेसी फिक्शन या इस टाइप का सीरीज एंड इफ़ यू नॉट रेड दिस सीरीज, हाईली रिकमेंडेड. आप सोच नहीं पाओगे कि जो एंडिंग होती है इस कहानी की, यू विल नॉट बी एबल टू गेस. एकदम माइंड ब्लोन वाला मोमेंट जो होता है ना कि ओह शिट व्हाट हैपेंड. Absolutely wonderful. Then another great series that I got recently introduced to because इसकी एक Netflix series अभी recently आई है, तो it's Pluto by Tezuka X Kurosawa. तो this is based on Astro Boy एक series है. So this is a manga, right? So I also like reading a lot of mangas because why not? It's just a different medium, but it's a fun medium. So Pluto has been a great and phenomenal read. Why? Because it takes into account ki what exactly is AI and does AI have feelings, and if they have feelings, so then should they be treated as humans? And there's a lot of important questions which now that we are entering the age of AGI, you might find interesting and useful. So general non-fiction की अगर बात करें तो there are these two great books. One is Thor Heyerdahl, The Kon-Tiki Expedition, and this is a book when you read it it blows your mind because if you can see the raft at the back of it, or the better thing, this guy along with 5 others took this raft and crossed the Pacific from South America going westward in the direction of Australia, जहाँ पे इनको जाने से पहले everybody told them you will die, everybody told them it can't be done, and they proved it was possible. And why did he think it was possible, and why did he consider going on this journey in the first place? Because he did not understand कि how did humanity come to move from
पॉलिनेशिया का जो नेशन है विच इज स्प्रेड आउट ओवर hundreds of thousands of miles of the Pacific, तो इट्स अ सिंगल कल्चर एंड ही वॉज लाइक कि भाई ये एक कल्चर कैसे हो सकता है जब मतलब इतना एक्सपेंस ऑफ ओशन क्रॉस ही नहीं कर सकते हो तुम. तो ही सेट आउट टू प्रूव अ न्यू थ्योरी ऑफ हाउ ह्यूमन बींग्स स्प्रेड अक्रॉस द प्लानट एंड मतलब माई गॉड व्हाट अ वाइल्ड स्टोरी. Now, another non-fiction that I would like to recommend is very, very, this Against the Gods, Peter L. Bernstein. So, I have always been very, very scared of probability. Naturally, I'm sure a lot of you will also be. But इस किताब ने basically, it gives you the story of the development of probability कि भाई किस तरीके से this whole science or mathematical art developed. And it's called Against the Gods because till the study of probability was done, it was just considered कि भाई हाँ जो चीज़ें हो रही हैं वो हो रही हैं. And he then goes on to link कि भाई how does the modern insurance business, जो actuarial science जिसको बोलते हैं, how is that from the beginnings of probability to coming to that. And now modern day में जो अगर आप ट्रेडिंग वेडिंग के बारे में देखा है, कहीं आपने सुना है, तो ट्रेडिंग में रिस्क मैनेजमेंट कैसे करते हैं एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में रिस्क कैसे मैनेज होता है, सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स लाइक इवेंचुअली कम्स टू दैट एंड इट्स अ वंडरफुल वंडरफुल बुक. इसके बाद आती है कुछ ये नॉन फिक्शन कह सकते हो इसको. तो वन ऑफ द बेस्ट बुक्स दैट आई हैव रेड ऑन दिस इज दिस बुक फैंटम्स इन द ब्रेन बाय B.S. रामचंद्रन. So this is a great, great, great book on understanding how your brain works. So I think this book is the first time when I learned that my eye has a blind spot. मतलब इससे पहले मुझे नहीं पता था. एंड इफ़ यू हैव नो क्लू अबाउट दैट, डू चेक आउट कि भाई वेयर योर ब्लाइंड स्पॉट इज. तो होता क्या है कि भाई आप इस इमेज पे बहुत देर तक फोकस करते हो यहाँ पे, तो फिर आपको इसकी ये वाली डॉट देखना बंद हो जाती है व्हेन यू फोकस, मतलब यहाँ पे. एंड सिमिलरली ओवर हियर. तो ऐसे कई सारे इन्होंने मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ें अबाउट द ब्रेन बताई हैं यहाँ पे. एंड पर्टिकुलरली देयर वाज द आइडिया ऑफ द ब्रेन होमंकुलस. तो आई कांट फाइंड द इमेज राइट नाउ, बट द होमंकुलस का आइडिया ये है कि हमारे जो सेंसेस हैं, देर आर सम ऑफ आवर सेंसेस विच हैव एन आउटसाइज्ड एरिया एसोसिएटेड विद देम इन द ब्रेन. माने कि मेरे हाथ पे जो चीज़ें आ रही हैं, मेरे फेस पे, पर्टिकुलरली मेरे लिप्स पे जो चीज़ें आ रही हैं, आई विल फील दोज अ लॉट मोर देन आई विल फील एनीथिंग एल्स. मेरे पैर पे जो कुछ हो रहा है, मे बी नॉट ऑल दैट मच. सो Phantoms in the Brain, absolutely wonderful read if you want to understand more about how the human brain works. Now, this is a biography. This is a great, great, great biography of the Buddha. मतलब I'd always wanted to read because I was interested in the idea of कि भाई मतलब the Buddhism is obviously a grand religion of the world, and the Buddha was like considered a human, right? बाकी सारे जो ऐसे रिलीजन्स रहते हैं उनका कभी बहुत ही सुपर नेचुरल सा ओरिजिन रहता है, बट दिस वॉज जस्ट लाइक रेगुलर गाय एंड ही फाउंड समथिंग. एंड इफ आई हैव एन एक्सेस टू हिज लाइफ स्टोरी, एंड दिस इज लाइक एन ट्रांसलेशन ऑफ द ओरिजिनल सोर्सेज. मतलब जो ऑथर है इनके, थिच नाथ हान, ही इज़ अ प्रैक्टिसिंग बुद्धिस्ट इन म्यांमार, एंड उन्होंने drawn directly from the 24 Pali, Sanskrit and Chinese sources, and naturally थोड़ा सा changes उधर किए हैं उन्होंने for the translation purposes, but it's a wonderful, wonderful biography of the Buddha. I would highly recommend that you read it. It gives you a lot of perspective on like what exactly is Buddhism, and UPSC में भी काम आ सकती है. Then there is this wonderful book which is Plato and a Platypus Walk into a Bar. This was a book that was given by a friend of mine while I was graduating college, so it might be one of the older books that I own. तो यहाँ पे क्या है, बेसिक्स ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी कवर कर दी गई है कि भाई क्या क्या चीज़ें हमें करनी है, कैसे है, फिलोसफी ऑफ रिलीजन किसको बोलते हैं. तो बोलने को अब आपको एथिक्स के पेपर में काम आ सकती है, बट अदर देन दैट इट्स अ वेरी वेरी एंगेजिंग वे टू लर्न अबाउट फिलोसफी. अ सिमिलर बुक इफ यू वांट ओवरव्यू ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी इज कॉल्ड सोफीज वर्ल्ड. So that also teaches you about Western philosophy in a very, very accessible manner. Then I had a couple of books. This is a book on Stoicism, Seneca on the shortness of life,
life is long if you know how to use it. So stoicism ka I've been a big fan. I have a lot of books on stoicism, but this was one of the first books on stoicism that I had. No, I think I had read Meditations by Marcus Aurelius. I think I have a copy. Let me get a copy of that. Right. So this book, Meditations, Marcus Aurelius, मिट्टी खा रही है अब बहुत टाइम से अभी. But this is a book that I have read and reread so many times over the years. क्यों? क्योंकि it's just a great book. It helps you really put a lot of things in life in perspective. Seneca, on the other hand, Marcus Aurelius was a Roman emperor, and as a Roman emperor, he talks about कि भाई मतलब दुनिया में लोग आएंगे तुम्हारा दिमाग खराब करने के लिए एंड तुमको नहीं करवाना है. It's as simple as that. And like when a Roman emperor is talking कि भाई उसको भी वही दिक्कत थी जो मुझे हो रही है, so suddenly things fall into a lot of perspective. So Seneca similarly came from an age where Roman Empire was well established, and Seneca was one of the most powerful senators around. And he also talks about similar things. So great read. Now, another great book on philosophy is Jiddu Krishnamurti, Freedom from the Known. This was, I ran into this book. मतलब ये किताब जो है, I think this was a copy जो my father had, and it had been lying on his like on his shelf for like the longest time, and कभी मैंने पढ़ी नहीं. But when I read it, it made a lot of sense. Jiddu Krishnamurti talks about a very simple idea, and like beyond that, the most wonderful story. So you will read about something called the Theosophical Society of India in when you're reading modern history. Theosophical Society of India was established by Annie Besant and a group of, not Annie Besant, but like a group of people, and Annie Besant was later associated with the Theosophical Society. तो थियोसॉफिकल सोसाइटी ने मतलब कुछ फंडे लिए, उन्होंने बोला कि भाई देखो एक मसीहा आएगा, राइट, और ये मसीहा आएगा कि और ये दुनिया की सारी दिक्कतों को दूर कर देगा XYZ. तो उन्होंने मसीहा ढूंढ लिया, एंड मसीहा ढूंढ के क्या किया कि भाई मसीहा को ट्रेन कर रहे हैं, गिविंग हिम द बेस्ट एजुकेशन इन द वर्ल्ड सो दैट ही कैन बिकम दैट वर्ल्ड चेंजर XYZ. And after getting all of that education and everything, the Masiha decided कि भाई I don't want to do this, right? But that's not what I thought I wanted to do in life. And like तुमको लगता है मैं मसीहा हूँ, मेरे को नहीं लगता, मेरे को नहीं करना है. So that guy, Jiddu Krishnamurti, maybe you can argue that he ended up becoming that Masiha because he wrote this great philosophy, this great book on how we are prisoners of our own mind and how can you escape it. As simple as that. Then a great book called The Inner Game of Tennis. So this was something that I was introduced to much later, but ये एक बहुत ही बढ़िया किताब है which tells you again some of the concepts which we had already covered in this book, Phantoms in the Brain, that there are different parts of the brain. One works in a controlled manner, one doesn't work in a controlled manner. एक बहुत ही expressive and like intuitive होता है, एक rational and slow होता है. So this is something that you might also find in Thinking Fast and Slow, which is another great book. But in this particular book, what Mr. Timothy Galloway is talking about is how do you use this understanding to give your best performance. As simple as that. कि भाई बहुत बार क्या होता है एग्जाम के दौरान हमको स्ट्रेस हो जाता है कि भाई मतलब मुझे चीज़ें आती हैं बट आई एम नॉट एबल टू परफॉर्म इन दैट लास्ट मोमेंट. Read this book. It's a slim book, it's a very small book, and I can guarantee you, you will have a better understanding of how to manage your own emotions. Right, and finally, one last book that I would like to leave with. It's a heavy philosophy book, Nietzsche on the genealogy of morals. तो पहली बार जब मैंने ये किताब उठाई थी तो मुझे जीनियोलॉजी का मतलब भी नहीं पता था कि भाई मतलब किताब का टाइटल ही मुझे नहीं समझ आ रहा है. तो आई थॉट इट वुड बी ए हैवी बुक एंड आई वांटेड टू चैलेंज माई सेल्फ. तो आई थिंक राइट. So the date of this book is from July 2017. I generally have a habit of writing कि भी कौन सी किताब मैंने कब खरीदी. तो because this book I bought in my third, fourth attempt while I was giving. I got selected I think in this attempt 2017 वाले में.
एंड आई वॉज ट्राइंग टू चैलेंज माई सेल्फ कि आई वॉन्ट टू रीड समथिंग जो मतलब मुझे टाइटल नहीं समझ आ रहा है, तो मतलब लेट्स ट्राई समथिंग. एंड इट वॉज अ वंडरफुल बुक. मतलब देर आर प्रॉब्लम्स विद नीचे कि भाई नीचे की जो फिलोसफी थी दैट वाज समहाउ करप्टेड एंड यूज्ड बाय द नाजीज एज अ क्या बोलते हैं justification for doing the Holocaust. But in this particular book, he's talking about how morality evolves over the years, and he's talking about bringing about a certain kind of morality. So like you don't have to agree with him, but the ideas really open up your mind about कि भाई morals change होते हैं, morals are not fixed in stone. There are some things that we like to believe are fixed in stone, but maybe they are not so. So that's all. I hope you liked it. If you did, please do let me know your favorite book of the series, or if you want to recommend some book to other viewers and to me as well, please do let me know in the comments also. All the best and enjoy National Book Lovers Day.